शिवजी वो है you can't answer. Any of you have any questions, any doubt, ask. So you get, then it's one egg use me. First we will go with one video which I would like to play right now, and after that Vignesh will continue with the session. आज 99% इंसान और इंसान के पाले हुए जानवर बाकी सब साफ। धरती पे जितना जीव है और इन सब को आप जोड़े तो इंसान सिर्फ 0.01% है और इस इंसान ने 80% दूसरे सारे जीवों को साफ कर दिया। राक्षस बन गए हम, पूरा धरती को हम जिंदा खा रहे हैं दीमक की तरह। विनाश तो बनाएंगे। My Hindi is okay, na? If I mix, okay. So I keep mixing. So you all saw this video. Let's start with a question only. Anybody has any doubts on it? कुछ अजीब लगा? Anything which you don't agree with? So the thing is, I saw in your video that the milk and milk products should not be consumed right now because it's not ethical basically what they are doing right now. So if we shift to ethical part, then it's fine to consume them. So thank you, Roshan. Thank you for your question. So veganism is not against any product. We are not saying कि आप ये करो या वो न करो. The only request veganism makes is, can you please not exploit another living being? Please can you not do that? That is the basic thing. सबने दूध पिया है, बचपन में पिया है, अपनी माँ का पिया है। क्या आपकी माँ का हम दूध निकाल के व्यापार कर सकते हैं? अच्छे से रखूंगा, रोज खिलाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा, पिक्चर भी दिखाऊंगा हफ्ते में एक बार, और दूध आते रहे इसके लिए आई कीप अ प्रेग्नेंट एवरी ईयर, क्योंकि दूध तो प्रेग्नेंट होने पे आएगा ना, बराबर कि नहीं? और दूध मेरे को ज्यादा चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत है, तो क्या मैं ऐसा एक आध ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मार दूं ताकि दूध ज्यादा आए? अच्छे से करूंगा मैं, एथिकली, एसी कमरे में रखूंगा, प्रॉमिस। कैन आई डू दैट? इट इज नॉट पॉसिबल to do business on any animal's product nicely and ethically. आपके घर पे कुत्ता है? अगर है तो किसी के पास कुत्ता है, किसी के पास बिल्ली है, some people have parrot, right? Do you take anything from them? That is nice, that is love, unconditional. प्यार से रखा है, प्यार से रखते हो. That is very nice. If you want to keep a cow like that, amazing. You want to keep an elephant like that, very good. Don't use them for giving rides. Don't use them for earning money. Then it is wrong. Any other question? See, I have tons of matter. मैं शुरू हो जाऊंगा तो मैं कल सुबह तक भी चलूंगा. But I don't want it that way, because that is then boring. Boring for me also. Lovely people out here, I would rather hear you all, see you all, smile, make faces, all of it. Tell me. और कुछ? Milk का replacement तो नहीं है. How do you get those nutrition, that type of vitamins and everything except for milk? On a personal level, I'm a vegetarian, but I'm not a vegan. So also many people must present here must be confused कि difference क्या है? It's the same, but I know it's not the same. So how do you propose कि एक vegetarian एक vegan बने but उसका health suffer ना करे? Your name I didn't get. Divyanshu. So एक बात समझें, what is milk actually? All mammals give milk, बराबर? What is milk for? Milk mammals इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार नहीं हुआ है. It is still work in progress. Teeth is not there. So quick, easy food is what the mother makes for the baby. And secondly, this milk has lot of stuff which will help that baby grow fast. Growth hormones and what all. Okay?
ऐसा कोई प्रजाति है, is there any species which drinks another animal's drink, another animal's milk? Is there any प्रजाति? Only man. And man is the smartest. We have multiple sources. दूसरे जानवर तो फिर भी खाने के लिए तरस जाते हैं. They are always looking out. Humans have tons and tons of food. So the nutrition and whatever you're talking about is available in all the other plant-based food. All seeds, everything. Omega-3 fatty acids, all the vitamins, all the minerals, everything. So दांत चले गए तेरे, पेट खराब हो गया, then you need milk. And after add on to the question, you said plant-based products, but at the same time they're equally costly. And you said कि इंसानों के पास खाना है, but अच्छा सवाल पूछ रहे थे. you mentioned about plant-based products, so they are equally costly, right? Milk आपको you get 30 rupees a packet or 50 rupees a packet, whatever. But plant-based products, I'm sure उससे ज़्यादा costly होंगे. And you said इंसानों के पास खाना है, we have tons of food. It's true, we have tons of food, but बहुत लोगों के पास नहीं है. So वो लोग क्या करें? ये रिसर्च करके आया कि कैसे मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा. I'm joking, but thank you. So the alternate, एक तो सबसे पहले तो please understand, milk is not needed. ठीक है? For us, milk is not needed. Milk is just a fancy stuff. Ice cream में, cheese में, those are not needed. Those are just pleasures. Milk के जितने भी product अपन लेते हैं, those are all pleasures. They're not really needed. Okay? So इसके alternatives, actually alternatives are not needed. I have black coffee, black tea. When I was abroad, अमेरिका में एक बार, तो मैंने कहा था कि I need milk. तो they looked at me and said, why do you need milk in your coffee? You want coffee, right? Yes, black coffee. But we are used to it. हमें आदत लग गया है कि हम ऐसा ही पीते हैं. Anyway, so उसका अगर alternative चाहिए, तो soy milk, cashew milk, oat milk, coconut milk, so many. और ये सब आप घर पे बनाइए, बड़ी आसानी से. In 30 rupees, you will get 3 bottles soy milk. So you don't have to buy it from outside. First, you don't need an alternative. But still, if you feel like pouring something white in your tea or coffee, then there's soy milk, there's cashew milk, there's coconut milk, there's oat milk. Hi, you all get to sit in the front. Lucky girls. हाँ, गरीब लोग के पास, we may still be able to afford it if it's expensive. गरीब क्या खाएंगे? इंडिया में गरीब शाकाहारी ही खाता है. घर पे वो लोग ज़्यादातर वही बनाते हैं. अगर उनको ऐसा लत लगती है और ऐसा if they are also into it, तो संडे में एक बार नॉनवेज खाते हैं. वरना it is all there. साउथ में all the dishes have coconut milk. All coastal regions use a lot of coconut milk because coconut is grown over there. Soy milk. So many things. So do I answer the question? Yeah. So the alternatives are not needed, but if you want to put something white, there's many things available. और घर पे बनाओ एकदम सस्ता. और नहीं बनाना तो खरीद लो दुकान से. 50 दुकान है. So, since you all came late, you all have to ask a question each. They have no idea. They have no idea. Please, I'll come there. As in, milk products are a very huge factor in our religion. So, maybe the religion factors do not adhere to veganism. They'll never accept veganism. Your name? Janvi. Janvi. Very good. Good question. भारी question है, but good question. So, fortunately, unfortunately, most of us have not read the holy scriptures, religious books. We have not read them. बराबर? But if I ask you, basic essence क्या है religion का? एक आध word, key values, peace, humanitarian, kind, you can't answer. We don't want prompting from within. So, peace,
ह्यूमैनिटेरियन, अब उसने प्रॉम्प्ट किया तो मैं भी प्रॉम्प्ट करता हूं, लव, लव है, कंपैशन, और कोएग्जिस्टेंस। हाँ, इंडिया में बेसिक सबसे बड़ा रिलीजन है हिंदुइज्म, राइट? सो हिंदुइज्म तो सेज कि सारे प्रकृति के साथ रहो. In fact, we are so much into it, we say worship the river, worship the mountains, worship the trees, because they are there with us, they help us in life. Worship the animals also, right? So अगर ये basic principle है religion का, how will it say exploit an animal? How will it say kill an animal? How will it say interfere with them? In billions, we're not talking 100 and 1000, billions. Human population कितना है? 8 billion, और फट रहा है ना? The earth is already ready to collapse. We kill and eat 80 billion land animals 10 times every year. And marine animals का बात ही नहीं करते हैं. They are 35 times more, and they are so much huge कि अपन उसको टन में गिनते हैं. So I am not targeting, okay, यहाँ पे veg, non-veg and all that. That is not my business. I was a non-veg, by the way. So जब जागो तब सवेरा. You want to know how fish is caught? Commercial fishing कैसे होता है? Multiple ways. But उसमें जो सबसे famous है वो है, let's say कि all of you are sitting over here and I want to eat only the ones with the chasma. They are the favorites. They are hot selling ones. चश्मिश लोग, including me. Okay? So चश्मिश पकड़ना है मेरे को. अब समुंदर के अंदर मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा कि चश्मिश कौन है, चश्मिश कौन है? I have to send people in ना, उतना टाइम नहीं है. So what do I do? A huge net thrown in. हाथी घोड़ा पाल की सारे के सारे. We catch all of them up on the ship, dumped, and then we segregate. और बाकी के जितने मरे, I don't care a shit for them. They are bycatch. So 50% of animals marine fishing में are bycatch. Useless, मार के फेंक दो. That's how we do it. That's how it is caught. And think of it, I mean, those huge trawlers go with those huge net. क्या specific मच्छी ढूंढ के आता क्या? Or they will drop a line which is 10-20 kilometers long with thousands of hooks in it, thousands and thousands, and they will keep sailing away. The fishes, whoever आके पकड़ते हैं, and they're dragged. Anyone, octopus हो, जो भी, and they're useless for me later. I drag it all up after hours and hours of torturing them, and then I choose what I want, and the rest are by kill. So that is how it is. So अभी अगर कोई मुझसे सवाल पूछे, अगर लेकिन मैं प्यार से मच्छी पालूं, उसको बड़ा करूं, अपने ही फिश टैंक में, तो खा सकता हूं क्या? So यहाँ पे it becomes very difficult ना कि भाई मैं तेरा वो एक मच्छी और तेरे अकेले के बारे में बात नहीं कर रहा. I'm talking about the 99.9% that happens out there. Scientists have predicted, not one, many studies are there. अच्छा, मैं जो बोलूँगा रिसर्च करना, हाँ, please Google it and check it out later. By 1948, in the next few years, the oceans may go empty the way we are catching fish. And if the oceans die, what will happen? We will die. पूरा बैलेंस उड़ जाएगा. 2 पैसे का गूगल सर्च. Scientists predict oceans will go empty by. Sure, the fish industry, all those industries have done counter studies against it. कि नहीं, not possible. Because they are in business. $billion businesses they have. I'm sorry, I ran away from religion. So all religion says, जहां तक हो सके बेकार में किसी का नुकसान न करो, अपने जीने या खाने के लिए. And that's the exact line I say in veganism.
जहां तक हो सके अपने जीने और खाने के लिए किसी दूसरी जान का शोषण न करो। Hinduism believe that शिव भगवान को दूध चढ़ाते तो ये होता है वो होता है, so this can't be brought out from their heads, so it's still going to stay in there and it will still go on because it's been going from generations. So how are they going to adapt to this new concept? So all the girls over here, their traditions है पुराने, you all are useless, you all shouldn't be here, you all should be in the kitchen, you all are inferior. दिमाग में बैठा हुआ है बहुतों का। What to do about that? Should we follow it? बहुत सारे बुड्ढे मानते हैं ये। गांव में अभी भी चला आ रहा है। घूंघट किधर है तेरा? कैसे बैठी है यहाँ पर मुर्दों के बीच में? What do we do about that? मान लें पति मरते ही मरना है तेरे को सती में। So because it's happening from a lot of time doesn't mean it is right. You are the young generation. You're going to follow that or you're going to do what is right and proper and new. So चला आ रहा है तो करूं, मैं पागल हूं क्या? नहीं ना। So अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप बंद कर दें, उनका अपना जर्नी। और रही बात शिवजी की, शिवजी भोलेनाथ हैं। You know who Shivji? I don't know how many of you all. I'm good in mythology. मैं बड़े बड़े स्टोरी सुनाऊंगा। Of all the gods, the three tri-gods, Shivji वो है who understands the whole world is rubbish and nonsense. वो भोलेनाथ, उसने त्याग दिया है सब कुछ। He has all bhasma on his hand, which is ashes. He says this is the only truth. All that exists over here is nothing. It's only ashes that matters. And he abandons everything and he sits and he meditates. He doesn't care for your milk, your honey, your ghee or whatever. He doesn't care two hoots. And he is called Bholenath. Why does he is called Bholenath? क्योंकि वो ज़्यादा सोचता नहीं, वो खाली प्यार देखता है, श्रद्धा देखता है। बोलता many gods have a problem. बोलते शिव जी आप क्या वरदान दे के आ जाते हो, सोचते नहीं हो। जैसे उसने एक आदमी को वरदान दे दिया, एक राक्षस को, कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो मर जाए, जल जाए। Anybody knows that राक्षस का नाम? भस्मासुर। शिव जी के पीछे पड़ गया वो, शिव जी भाग रहे हैं कि अरे सोचा नहीं ये क्यों दिया इसको, राक्षस था वो। पर शिव जी डजंट डिफरेंशिएट राक्षस, असुर, देव, इंसान, दानव, कुछ नहीं। फॉर हिम एवरीथिंग इज द सेम। ही मेक्स नो डिफरेंशिएशन। सो अगर आप ये शिव जी के लिए कर रहे हो, आई मीन व्हाट? धर्म इज राइटियसनेस, डू व्हाट इज राइट। और धर्म बदलता है समय के साथ। सो इंडिया रिलीजन इज धर्म, डू व्हाट इज राइट, व्हाट इज प्रॉपर। और समय के साथ वो बदलेगा। इन एवरी कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू चेक, इज इट राइट? शैल आई किल माय अंकल? इज इट राइट? अबे नो, रॉन्ग। लेकिन महाभारत में इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट वाज राइट। जो इस समय सही है वो धर्म है, वो नैतिक है, वो सही है। इट्स नॉट हार्डकोर रिटन फॉर अस, सो वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। Our land is a land of culture. Everything is evolved over here, a way of living. Okay? So religion तो हमारे आड़े आना ही नहीं चाहिए, because we are rich. We are not tied. We are tied only to the Sanatan Darshan. What is Sanatan Darshan? You have heard this word, Sanatan Darshan? Sanatan सुना? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन। आधे लोगों को पता भी नहीं क्या है वो, खाली बोलते हैं। Sanatan means which is timeless. जिसका अंत नहीं है, जो कहां से शुरू हुआ पता नहीं है। और दर्शन मीन्स फिलॉसफीज। तो सनातन दर्शन इन्हें वो प्रिंसिपल्स जो हमेशा से चले आ रहे और रहेंगे। और कौन से प्रिंसिपल्स है वो? जो अभी आप लोगों ने बताया, पीस, अहिंसा, प्यार, भाईचारा, नेकी। तो अगर आप सनातन हो तो दिस इज व्हाट यू मस्ट डू, not those written words, written lines.
भारी हो गया, ज़्यादा बोल दिया? Any other question? Please. परिशी. परिशी. Yeah. So ये exploitation बहुत सालों से चल रहा है and everybody are knowing it, but for now it's a trend. It has become a trend that being vegan and all. So ये awareness पहले से ही था कि अभी ही ये पूरा शुरू हुआ है, because इतना हो गया कि restaurants में also they're telling कि vegan is available. इतना impact हुआ है, तो why is it कि अभी ये सब शुरू हुआ है, पहले से क्यों? One thing is, it is not a trend. If anybody is following it as a trend or a fashion, he will not last long, he or she. A couple of months का नौटंकी करेंगे, बेल बॉटम आया, बेल बॉटम पहना, फैशन चेंज हो गया, चेंज हो जाएंगे. So we are not for that. Okay? I'm not standing here and saying, oh, being vegan is cool, man. तुम भी बनो. I'm not saying that. Please understand the ethics behind it. And if the ethics touch you, be a vegan. Or if you don't like the word vegan, don't यार, get rid of the word. अच्छे इंसान बनो यार, बस अच्छे इंसान बन जाओ, नैतिक इंसान बन जाओ. Be ethical, be nice, be just, be responsible, be kind, and it will lead to veganism. It will lead to ahimsa. It will lead to humanity. So if it's just fashion people are doing, then I am sorry for those people. They will not last long anyway. वो कल दूसरा fashion कुछ करेगा. Okay. So why is it happening now? की जगह पे I am happy it is happening now. I'm happy it is happening now. I hope it happens more, because there's so much more. The data in fact says the count of non-vegetarian is increasing every day. Even with all this, our human population is growing, the count of non-vegetarian is jumping. I'm not saying it's bad or good, guys. वहाँ नहीं जाना. I'm only telling you that when you say that, the data is something else. People having money to spend, और money और luxury है. Luxury में क्या? अरे पिज्जा खाते हैं सब जनों. कौन सा? चीज़ वाला मैं भी खाएगा. कैसे आया कोई नहीं पूछता. अरे बचपन से मैंने देखा, वो अमीर जब थे वो घी खाते थे बहुत दबा के. अरे अपन भी घी खाएंगे. वो रोज मटन खाता था, अपन भी मटन खाएंगे. So that is what's happening, mirroring. Nobody really wants to think. कहाँ से, कैसे, क्यों? And I'm inviting you all to just think and look at the facts. That's all. अंडा वेज है कि नॉन वेज है? वेज कि नॉन वेज? मेक अ चॉइस. वेज नॉन वेज? वो अंडे में से कभी कुछ निकलेगा? Will a life come out of that egg? आएगा ना. जो अंडा बाजार में मिलता है उसमें से नहीं आएगा. तो वेज है कि नॉन वेज है? हाँ, वेज नॉन वेज? अरे अंडा वेज है इसीलिए तो मार्केटिंग होता है. अरे वेज है, गुजराती लोग भी खाते हैं आजकल, वेजिटेरियन लोग भी बता रहे हैं अंडा वेज है, खाओ, इसमें से थोड़ी कुछ निकलने वाला है. सो दैट इज हाउ एग इज ऑल्सो मार्केटेड नाउ. बट लेट्स अंडरस्टैंड एग कहां से आता है. इज इट ओके? कोई सवाल पूछा नहीं, मैं ही बता रहा हूं. सो एग, मुर्गी देखा तुमने? ऐसा फिल्मों में यहाँ वहाँ पे मुर्गी बच्चे को लेके घूमती है. हैव यू सीन दैट? मुर्गी चलती है, 4-5 बच्चे पीछे. सो मुर्गी माँ है, अपने बच्चों को वो जब बड़ा, दे से कि मुर्गी जब अंडे पे बैठती है ना, शी टॉक्स विद द बेबीज एंड द बेबी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. दे कम्युनिकेट, मदर एंड बेबी. इट्स अ फैक्ट. रिसर्च कर लेना. दे टॉक, उनका तभी से बॉन्डिंग होता है. निकलती दोनों माँ कौन है, सुना है आवाज, एंड दे फॉलो द मदर. माँ जहाँ जाती है वहाँ. वेरी सोशल एनिमल मुर्गी, वेरी. अपने बच्चे को वो 4-5 महीने घुमाती है, दुनिया दिखाती है, सिखाती है सब कुछ, फिर भगा देती है, फिर वापस बच्चा देती है 6 महीने बाद. और कितने अंडे देती है? कितने अंडे देती होगी? हम नहीं, 100 तो नहीं देगी, 100 थोड़ी संभाल सकती है. कितने देती होगी? 5, 6, 7. सो दिस वे इन अ ईयर ट्वाइस शी लेज एग्स इन क्लचेस ऑफ 6 or 7. सो एक मुर्गी साल का 12 से 15 अंडे देती है मैक्सिमम. उसी मुर्गी से कितना अंडा निकलवाते हम? बट दैट मुर्गी विच कैन ले ओनली 12 to 15 eggs, वी मेक अ ले क्लोज टू 250 to 300 eggs इन अ ईयर. वो बेचारी अंडा दे, और अंडे के लिए कैल्शियम शेल उसकी हड्डी में से निकलता है. व्हाट हैपेंस टू दैट मदर?
गल जाती है, अंडा दे देखिएगा इंटेस्टाइन्स पॉप आउट, मर जाती है। और वो इतना बुरी तरह से गल जाता है उसका शरीर कि उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि खरीदेगा नहीं, बोलेगा भाई इसका मैं क्या करूं। सो दे ग्राइंड इट एंड फीड इट टू देम ओनली। One thing must be said, this animal cruelty industry is very efficient, no waste. They use everything up. उससे इतना अंडा निकलवाते हैं कि वो पिचक जाती है बेचारी, मर जाती है। Why does she give so much egg, by the way? She's a mother. She's programmed by nature कि give egg. You have to. That's your purpose in life. So she gives an egg. अंडा चुरा लिया, पगला जाती है कि अरे मेरा अंडा किधर, अंडा नहीं, अरे वो और देना पड़ेगा। एक और देती है बेचारी, वो भी चुरा लेते हैं दूसरा दिन। She is poor thing caught in that cycle to complete her motherhood. And we take advantage of that. That's what we do. We understand that these are nice creatures, social creatures, and we take advantage of them. Sorry. Not nice. So that's where we are. चलो अगला सवाल, come. Any question? Suppose I am a gym freak and I want to build muscles. My weight is maybe 50 kgs. So मुझे at least 50 to 60 gram protein लगेगा. So one egg gives me around 6 to 7 gram proteins. That much amount of protein I can't take out of vegetarian food. Then what are the substitutes? एक वीडियो देखते हैं. It's related to the question. सोयाबीन एक सस्ता और बहुत ही बढ़िया खाना है. उसको लोगों ने बेकार में ही बदनाम कर रखा है, क्योंकि दूध और मांस के मुकाबले इसमें कहीं ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि बहुत कुछ है. नया मेडिकल स्टडीज सब कुछ यही बताता है. वीडियो के एंड में आप हमारा स्लाइड जरूर देखें. जी हाँ, कुछ लोगों को 100 में 1 या उससे भी कम लोगों को सोया का एलर्जी होता है. तब आप उसका सेवन न करें. बस 2 बातों का हम सबको ध्यान रखना है. पहला है विटामिन डी. विटामिन डी मुफ्त में सूरज की किरणों से मिल जाता है, पर हम सब छांव में काम करते हैं, ऑफिस में, घर में, तो सूरज मिलता ही नहीं है. दूसरा है विटामिन B12. हफ्ते में 1 या 2 बार आप कोई भी सस्ता सा मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स या B12 का सप्लीमेंट ले लें. एनी क्वेश्चन? So if we eat 100 grams of dal, then we get 18 grams of protein. If we eat 100 grams of soybean, then we get 25 grams of protein out of that. But I have to eat 100 grams. That is not at all like on daily basis. I can't eat that much amount of dal and soybean. And if I eat excess soybean, then I will produce basically estrogen will get produced in my body, which I don't want. So soybean chunks, Nutrela. In every 100 grams, there's approximately 40 plus gram protein, not 25. If some may have even 50 grams protein, 50%. Okay. Soybean se the dairy and the animal product industry, egg industry is very scared. Very. It's a cheap source of protein, an amazing protein, which is amazing for our health. So उन्होंने उसको बदनाम कर दिया है. They have said कि सोयाबीन, सोया has phytoestrogen. Soybean has phytoestrogen. What is phytoestrogen? Phytoestrogen means plant estrogen. And phytoestrogen is something that mimics the estrogen in human beings, but it is a very weak form, 100 times weaker. New studies says phytoestrogen in fact is good. ये पुराना सब कि एस्ट्रोजन है. If you have lot of soybean, men will develop breast, they will become like women. Actually, bodybuilders are scared to take it. वो चेस्ट मार रहा है, चेस्ट बनाने के लिए वाबे. They don't want to touch it because of that.
Misconception. So you please research this, huh? Don't go on me. One more thing. Is phytoestrogen only in soya bean? Exactly. There are hundreds of plants which have phytoestrogen. और उनके बारे में बात कोई नहीं करता. तो तूने आज जो खाना खाया ना, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन था. जो भी हो, गारंटीड. बदनाम कर रखा है सोया को. Because they are afraid of it. In fact, to go more deeper, the phytoestrogen, those molecules, they go and attach. In fact, women who have chances of breast cancer and whatever, they should have it. Because it goes and prevents it. So, yeah, pad lena. Huh? Go and research this. There's a lot of depth in it. So, phytoestrogen is good for us. It's good for our skin, good for everything. And it's a very weak estrogen. By the way, do you know you have estrogen in your body? What must he avoid if he wants to keep away from estrogen? What must he avoid? Estrogen is maximum in a woman when? When is it highest? When she is pregnant, when she is lactating. When is it highest? When she is lactating and she is pregnant. And a cow or a bhais or this bovines are kept pregnant constantly. What you must avoid? Fact. Okay? You may research this. पर ये कोई नहीं बोलता. This is not spoken. All man and women has estrogen as well as testosterone. Men have more testosterone, so we are man. Woman has more estrogen, so she is feminine. Okay? But there's a balance of it. So हम सब में वो दोनों होता है. ये totally गलत बात है कि एस्ट्रोजन सोया से आता है. No. Wrong. Not one single study you will find it. ये वो जिम का आदमी बोलेगा जिसको वे प्रोटीन बेचना है. So those industry people do that. But you Google it, you search it, and you'll find there's nothing to it. एक. Second, he said about कितना खाऊं मैं दाल, है ना? So protein is also something that has been excessively sold. It's a marketing that has happened. How much protein do you think we need? How much? What's your weight? 50 पकड़ते हैं, easy calculation. 45 में difficult होगा. So 50 kilos. Okay? How much protein does he need every day? No. 0.8. 40 grams. अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो, तो कितना ग्राम चाहिए? Marketing. If his weight is 50 and he goes to the gym, he needs 100 grams. माल बिकेगा ना भाई, ऐसा करेगा तो. नहीं तो कौन खरीदेगा ये वे प्रोटीन का डब्बा? You need only 1.5 times more than enough. अरे understand one thing. A human body. Do you understand what is bodybuilding, guys? Sorry, हाँ थोड़ा सा मैं agitate हो रहा हूँ. Understand what is bodybuilding. Our human body is not made for those big muscles. We are not bears or hippopotamus. We are not that. We will never get those huge ones. Understand? When I say bears, I mean respect. It's muscular. A python is only muscles. Genetic है वैसा. Our genetics is not made for that. So bodybuilding में, those professional bodybuilders are all on steroid, and it's a given. I am not disrespecting them, guys. They work solid. Steroids लेके ऐसे नहीं कि मसल बन जाते हैं. They work hard, 8 to 10 hours every day, disciplined. Time to time उठ के खाना, मिक्सी, ये difficult life. When I do a lot of bodybuilding और थोड़ा मसल आर्म बढ़ जाता है मेरा, तो मेरे को सोने नहीं होता है. I can't turn this side, and nothing I am compared to those guys. So a lot of discipline, but that's steroids. So what is bodybuilding? Bodybuilding is, you know how muscles work? Muscles always work in contraction, by the way. This biceps contract होता है और ये ऊपर आया. How do I put it down now? Not lats, triceps. They squeeze and they go down. So entire body muscles work by contracting, and that's how movement happens. ये उंगली ऐसा हुआ, something contracted over here. सीधा करना है, पीछे का contract. Understand? That's how. So when I do this muscular movement,
with heavy and strain it, they tear and they break. बराबर? They tear and they break. कपड़ा फट गया इस्तेमाल करते करते, जीन्स फट गया, तो क्या करने का? Then you sleep, and when you sleep and rest, in the next 48 to 4-5 days, your body repairs that muscle. और रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन एंड थोड़ा सा प्रोटीन. नॉट 100 ग्राम. 100 ग्राम का प्रोटीन क्या करेगा शरीर? इट्स नॉट अ फैक्ट्री. ओवर टाइम चालू है वो स्टेरॉइड पे. स्टेरॉइड पे बॉडी गोज इनटू एनाबॉलिक प्रोसेस, कंप्लीट एनाबॉलिक प्रोसेस. Then you take 100 gram protein, then you need. But normal, no, you don't need. Body उतना fast बनाएगा ही नहीं. Understand that? So you need only 1.5. So where he needs 40 grams protein, अगर आप जिम जाना शुरू करोगे तो 60 ग्राम खा लेना. Enough. या स्टेरॉइड का इंजेक्शन ले रहा है तो 100 ग्राम पे रहे. No problem. So you don't need that much protein. It's just marketing. और 60 ग्राम प्रोटीन आपको आसानी से आपके डेली खाने में मिल जाता है. This is just marketing. Okay, sorry girls, possibly you all are not interested in this, but okay. So आपको उतना दाल खा. अच्छा, दूसरा एक और चीज, we Indians basically were all initially poor. We come from very poor. सब स्ट्रगल करके आए हैं. सो माँ बाप ऐसा दे टेल यू ना, अरे खाना वेस्ट मत करो, हमारे टाइम पे मिलता नहीं था. इट्स अ फैक्ट. तो इतना दरिद्रता, इतना गरीबी से आए हैं अपन सब. पॉइंट क्या था मेरा? पॉइंट भूल गया मैं. नहीं, हाँ, खाने का तरीका कि इतना आवर वे ऑफ ईटिंग ओनली इज टोटली रॉन्ग. हाउ डू वी ईट? सिंस वी वर पुअर, वी टेक सो मच राइस और उसमें अपन थोड़ा सा एक कटोरी दाल डालते हैं. That rice is only calories, tons of calories, with less nutrition. और वो अपने खाने का तरीका है. या हम 5 चपाती खाएंगे इतने से भाजी के साथ. पेट भरने का सवाल है. So we eat wrong. आप 1 चपाती लो और इतना सब्जी लो, दाल पियो इतना, थोड़ा सा राइस लो. बी स्मार्ट एंड कैलकुलेट. इतना में चावल क्यों खा रहा बाबा? क्या है इसमें? खाली कैलोरीज, न्यूट्रिशन कितना है ही नहीं. सो 2 वाटी दाल पी जा, थोड़ा सा राइस ले ले, सब्जी खा लो अच्छे से. ओके, सो ईट स्मार्ट, पिक अप न्यूट्रिशंस. ओके, एंड अदर थिंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, genetics also plays a huge role, huh? So your genetics also matters. 66% of Indians are lactose intolerant. We cannot digest it. It's a 2-minute search. 66% Indians are lactose intolerant, means of the 100 sitting over here, not 100, how much? 50 of the 25. 1/3 are the only ones who may be able to manage it. 2/3 are not able to manage it. And we end up with acne, lot of acne. We end up with bloating, overweight, and immunity system drops down. We get allergies. ये facts हैं, हाँ, आप check कर लेना. Dairy causes all of this. Because the body is continuously fighting. What is lactose, by the way? Lactose is a sugar which is there in milk. Lactase. तो उसको digest करने के लिए our body needs lactase enzyme. As a baby, our body produced a lot of lactase because we were drinking only milk. 3 साल के बाद जैसा बच्चा बड़ा होता है, our body stops producing lactase. जरूरत ही नहीं है. कुदरत बोलता है भाई दांत आ गया, अभी काय के लिए दूध पिएगा ये, उसको क्या होना, इंसान क्या कर रहा है. सो बॉडी अपने आप से लैक्टेज एंजाइम कम कर देता है. बट वी कंटिन्यू. मम्मी डैडी पीछे पड़े, अरे दूध भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बच्चा कोई नहीं बोलता मुझे दूध दो. हैव यू सीन दैट? अ बेबी आस्किंग फॉर मिल्क, हिज बॉडी इज नॉट ओके विथ इट. लेकिन माँ बाप फोर्स करते हैं और फाइनली वो फोर्स करते करते आदत लग जाता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिगरेट. पहला दम मारते, what rubbish is this? Who the hell wants to take this dirty smoke in? So your body rejects it and you say don't want milk. और फिर पीते पीते आदत लग जाता है. अरे कुछ नहीं हो रहा है, पर हो रहा है. Research this, okay? As he says, please research, be wiser. Estrogen.
Okay. So veganism is for the animals, okay? It is only for the animals. Veganism came up saying human beings are very cruel to animals. Let's stop it and let's come with this philosophy of being vegan. Let's not harm animals. पर इसका बाय प्रोडक्ट में इनडायरेक्टली पता चलने लगा कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. प्लांट बेस इज गुड फॉर हेल्थ. It is amazing. No issues at all. Has enough protein, has enough nutrition, everything except those two. Remember? Vitamin D and B12. Even the cows and other animals that we consume are given B12 injections. Even they don't get B12. B12 is made by the bacteria. Only when you consume it, you get it. So अगर आप गांव साइड में रहते हो और गंदा पानी पीते हो, मट्टी में से गाजर निकाल के खाते हो, you don't have an issue. अगर गांव में भी फर्टिलाइजर नहीं मारा तो मारा है तो गया, वो भी साफ हो गया है. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस टू. हाँ, सो हेल्थ के लिए बेनिफिट है. देन वी फाउंड इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो. व्हाई इज इट गुड फॉर द एनवायरमेंट? Meat produces a lot of carbon dioxide. Why? Because we breathe carbon dioxide out. Why? Why is animal farming, let's call it animal farming, animal agriculture, it's bad for the environment? Why? Why? You can't answer. We have a cheater between us. Medical waste. He is my favorite. क्या नाम तेरा? क्या नाम? ओम. Let's say ओम को अपन खाने वाले हैं मार के. We love non-veg, so ओम को अपन मार के खाएंगे. So ओम को अगर मारेंगे तो कितना आदमी खाना खा सकता है इसका मांस? कितने? बोले नहीं कितने आदमी खाएंगे? खाली 50 किलो का है यार. वो भी ज्यादा बोला 45. उसमें भी हड्डी है, चमड़ा है, बाल है, जो नहीं खाएंगे अपन. और उसमें भी इंटेस्टाइन्स, वो भी नहीं खाते कोई. Very nice. You all are making face, he's saying please, but that is what we do with other animals, no? But coming back to the point. So, ओम को कितना आदमी खा सकता है मार के? 20 आदमी. चलो, तो वजन बढ़ा, ज्यादा लोग खाएंगे. So, लोगों के लिए वजन बढ़ा. ऐसे जानवरों के साथ करते हैं अपन, वजन बढ़ाओ ताकि ज्यादा बिके, ज्यादा लोग खाएं. अभी ओम का उम्र कितना है? उम्र 17 साल का. अभी 17 साल में इसने कितना खाया? बचपन से खा ही रहा है, रोज खा रहा है, 3 बार खा रहा है, 4 बार खाता है, 2 बार खाता है. सो 17 इंटू 365. चलो शुरू का 3 साल छोड़ दो, दूध पीता था. तो लेट्स से 12 इंटू 365 इंटू 2 मील्स कितना हुआ? उतना खाना इसने खाया और 20 आदमी ने इसको खाया. Are you understanding the loss? The amount of resources that went, the amount of carbon emission that happened. Is it sustainable to grow Om and eat him? इसका अपन मास प्रोडक्शन करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे, नहीं कर सकते. क्या होगा? So we said this in a joke, but this is what we're doing. Our entire dairy and animal agriculture is unsustainable. It's killing the environment. जो बकरी को आप खाते हो 6 महीने, उसको 6 महीने में ठूस के बड़ा कर देते हैं बकरी को भी. वो बेचारा वो भी बच्चा ही होता है, लेकिन 6 महीने में उसको इतना खिलाते हैं और अच्छा खिलाते हैं. इफ एनीबडी टेल्स यू अरे बकरी तो घास खाता है, 6 महीने में बड़ा करना है. उसको घास खाएंगे तो अपने को 2 साल रुकना पड़ेगा, टाइम नहीं है, बेचना है. तो दे हैव फेड द बेस्ट ऑफ ग्रेन्स, सोय, सोयाबीन, all animals are fed. 80% of the soybean grown in the world is fed to animals because it's amazing protein and growth. So very unsustainable, killing the environment. Biggest cause of the Amazon forest being burned. What is it? Biggest cause. अरे अभी तो बताया, एनिमल एग्रीकल्चर.
Animal agriculture, biggest cause of all forests being cut down, of all drinking water getting messed up, animal agriculture. आदमी अपने हाथ से खा रहा है, we are eating the earth alive. You don't understand this. See, check it out, huh? All of this, check it out. So as you understand, it's not right business. बकरी को भी 6 महीना खिलाओ और वो भी दिन में 3-4 बार खिलाओ, दुनिया भर का पानी पिलाओ, दुनिया भर का नीला पानी नहीं है लोगों के पास. It's a perishable commodity, water. Once it finishes, what will you do? Perishable commodity. Every grain that you grow requires water, land, resources. It consumes the minerals from the soil. एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से इतना खेती करते हैं, इतना सोयाबीन एंड वॉट एवर, वो जमीन बंजर हो जाता है. देन दे लीव इट एंड कट द न्यू फ्रेश फर्टाइल फॉरेस्ट. मूव ऑन. पूछने का कोई नहीं है. अरे सबको खाना है, डिमांड है. सो वी फाउंड आउट वीगनिज्म में कि बिकॉज ऑफ दिस वी एंड अप सेविंग दिस ऑल्सो. सस्टेनेबल. भूखमरी. They say every day millions of children, every day millions, बहुत ज़्यादा, millions, they go to bed hungry, no food, water is a crisis everywhere. If we all of us adopt vegan, a plant-based food, भूखमरी 4 गुना ज़्यादा मिट जाएगा. उतना खाना उगाते हैं अपन. That much we grow. 80 billion killed every year. They are eating the whole year. So we are growing that much food and we are only 8 billion. Unsustainable, unwise, only because some industries want to make money and we are all caught in our taste. मजा आता है मजा. मैं मना नहीं कर रहा हूं. लत लग गया है. सब मटन चबाया तो ऐसा लगता है कुछ रह गया यार. आदत पड़ गया है. So there are many industries, by the way, now in plant-based, which are coming out with plant-based meat, plant-based chicken, which is as good as. Exact तो नहीं हो सकता. ओम का reproduce नहीं कर सकते. लेकिन as good as. As good as. It satisfies you. So you get chicken nuggets, plant-based, you get meat, you get mock meat. Jenny Lee and Ritesh came out with a, must have heard, Imagine Meats. So exact नहीं है, पर अपना जो ये चाहता है वो manage कर लो यार. As good as. And you contribute to the earth. You contribute to your own health. And you're out of that damn cruel cycle. Okay? What do you think is the future of veganism or your movement? Humans will evolve to be nicer. We will evolve to be kinder. We will evolve to be more sustainable and wiser. And all of this leads towards veganism. Once you come to know this is the cruelty, do you want to go into animal killing? Does anybody want to be? No. We don't want to do this. We don't want to be a part of it. How many of you all want to stand up and say, अरे मेरा जीवन का achievement है, मैंने 1 करोड़ जानवर मारा है. We don't want to be a part of this nonsense. Nobody nice wants to be a part of this. वो बस हो गया है brainwashing, conditioning, and we are into it. None of us want to be part of this shit. None of us. What do you want to be tomorrow? Kinder, nicer, more civil? Do we want a civil world or do we want any world? How can you call yourself civil if you do not treat your other co-fellow earthlings like this? Are you civil? Can human beings call themselves civil? There's one very nice, I'll show you all that, very nice. Okay? So मैं बहुत confident है, क्योंकि no nice person can ever say कि नहीं ये principles गलत. क्या गलत है इसमें? अच्छा बनो.
शोषण मत करो, मारो नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं करो. बेचारा जो जानवर पैदा हुआ तब से वो मुर्गी, यू आर सिटिंग इन दिस चेयर, राइट? योर एंटायर लाइफ इन दिस चेयर, लेट्स सी योर लिव इट. दैट्स वेयर यू शिट, दैट्स वेयर यू ईट, दैट्स वेयर यू डिलीवर. डू इट, करो. सब जानवरों के साथ वही होता है. गाय वहीं बांधे रहती है, मुर्गी बेचारा उतने से क्रेट में अपनी पूरी जिंदगी बिताता है. दैट्स इट. तुम लोग फिर भी कंफर्टेबल बैठे हो. दैट मुर्गी को ऐसा केज वाले इसमें रखते हैं ताकि हर शिट फॉल्स थ्रू एंड यू डोंट हैव टू क्लीन एंड शी कांट होल्ड ओवर द पुअर थिंग. इतना भीड़ में रहता है, वो उतना घसते रहते, दे एंटायर फेदर्स कम ऑफ, दे ऑल. You are still comfortable in AC. Who wants to be a part of that, yaar? Who? Which sane human wants to be doing that? So I'm very positive कि इंसान अच्छा बनेगा और अच्छा ही इसी और जाता है. Don't go on that word, okay? What we're talking about is being ahimsa. What is ahimsa, by the way? Ahimsa means? And non-violence is in what? इसको पकड़ के मारा, गला पकड़ा, मारा, वो है नॉन वायलेंस. आर यू अवेयर नॉन वायलेंस इज ऑफ मेनी डिफरेंट वेज, इवन इन वर्बल. तू समझता है क्या अपने आप को? दिस इज वायलेंस. अब्यूजिंग समवन इज वायलेंस. नॉट हेल्पिंग एनीवन इज ऑल्सो वायलेंस व्हेन यू कैन हेल्प. इवन थिंकिंग वायलेंट, पर फिर भी ठीक है, दैट इज ओके, तेरे अंदर प्राइवेट है, बाहर नहीं लाना. Ahimsa is in so many ways. It is not just मैंने इसको नहीं मारा, मैं मारता नहीं है. Ahimsa is in the way we live. Am I ahimsa? No, I am still work in progress. If any one of you counter करेगा मेरे को तो मैं भड़क जाएगा, I get aggressive, my ego comes up. That's violence. Amazing animation. Watch his other animations, okay? So if any questions, else we can move towards the closing. Closing? Yes, that yes came nice. So I have a video, but I seek your permission to show you all the reality that happens of what these animals go through. So if you all want, I can show you all. If you no, but let them say. Because this is what happens every day. ये continuously चल रहा है. You're sitting here, it's happening, it's happening, it's happening everywhere. We're not looking at it. So it will trouble you. पर सच्चाई है जो रोज होता है, हर जगह होता है, हर किसी के साथ होता है. So you may some shots में तकलीफ होगा, close your eyes, but हो रहा है ये. So if you all are okay with this, I'll play. Okay? Okay.
personally for me, it was really an eye-opening session. I'm a gym freak, as I was talking about, and मुझे vegan के बारे में idea था, but I was not really sure about it. So आज सर ने बहुत अच्छा बताया, and I'm definitely going to go vegan at some point of time in near future. A very, very eye-opening session. I actually got goosebumps. Very informative. I got to know many substitutes, like milk, ghee, it can be replaced. And it actually feels like I'm going to make an attempt to become a vegan now. It was really, it touched my heart. We got to learn a lot many things and looking forward to some changes in our lives. Thank you so much. So you. We had this event, Why We Care. Mr. Vignesh Manjeshwar and his team came and spoke to my students. They are 16 to 18-year-olds, junior college students, and I'm a business teacher here. So we do talk a little bit about animal abuse and how businesses cover up all the dirty tracks. But their team actually brought wonderful videos which actually made them cry, because they did not know what amount of abuse, what amount of pain, what amount of torture goes on behind the products that we think are innocent, right? It could be milk, it could be leather, it could be paneer, it could be any product that comes from animals. So silk and wool, so many things they cover, including seafood, which we hardly think about, and it was very eye-opening. The students actually sat for a very long time listening, talking. It was very interactive also, and I'm very happy that the other side of business is also out in the open. And it would have been a little difficult for any of us faculty members to show these kind of videos, but this is a fact, and I'm so happy that somebody like Why We Care, Vignesh and his team are doing this wonderful job. Thank you so much.